अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट। जाहिर सी बात है क्रिकेट ज़ोरों शोरों से शुरू हो रही है। क्रिकेट पे हम बहुत रेगुलरिटी में बात कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान हॉकी पे भी कुछ तब्दीलियां आई हैं जिन तब्दीलियों पे बात करेंगे। और क्या ये तब्दीलियां हमें पॉजिटिविटी दिखाएंगी, फर्दर ऑन बेहतरी आएगी पाकिस्तान हॉकी में, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लॉट ऑफ हैपनिंग। सो आई होप कि वो बेहतरी आए। क्या होगा, क्या लीग होगी, क्या हॉकी लीग होगी, डी मैक्स जो शुरुआत जिसकी हुई थी, अब मैनेजमेंट बदलने के बाद क्या वो तब्दीलियां आएंगी, उन तब्दीलियों के साथ जो है क्या बेहतरी आएगी कि नहीं, ये सारे सवालात और उनके जवाब आज आपको यहाँ मिलेंगे इस सेट पे, गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और शुरुआत करते हैं अपनी इस डिस्कशन की। बट बिफोर वी गो एनी फर्दर, एज यूजुअल वी विल स्टार्ट क्या हो रहा है इर्द गिर्द स्पोर्ट्स की दुनिया में, व्हाट्सअप इन स्पोर्ट्स में कि व्हाट इज़ हैपनिंग। सो स्पोर्ट्स में बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एशिया कप इज़ राउंड एट द कॉर्नर। बिल्कुल अब शुरू होने वाला है, चंद दिन रह गए हैं, एशिया कप की शुरुआत हो जाएगी। क्वालिफायर्स हो रहे हैं, 27 से जो है वो मेन राउंड की शुरुआत होगी एंड देन 28 को होना है वो बड़ा टाकरा। तो जब टीम पाकिस्तान की बात करते हैं तो एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी स्क्वाड एम्स्टरडैम से दुबई पहुंच गया है। कौमी क्रिकेट टीम कल 4 से शाम 6 तक आईसीसी एकेडमी में ट्रेनिंग करेगी। इफ्तिखार अहमद, उस्मान कादिर, हैदर अली एंड आसिफ अली ने दुबई में स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद हसनैन कल बरतानिया से दुबई पहुंच जाएंगे और टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त को भारत के खिलाफ खेलेंगे। अब भारत जो कि बहुत सारी T20 क्रिकेट खेलता हुआ है, पाकिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप के बाद इस एशिया कप के दरमियान जो है वो T20s बहुत ही लिमिटेड खेले, मगर भारत ने काफ़ी सारे T20s खेले और काफ़ी तब्दीलियां की, काफ़ी शफलिंग की और वो शफल करके एक टीम तैयार की। मगर उन शफलिंग के साथ साथ एक तरफ जहां टीम शफल हो रही थी, वहां कोचेस भी शफल हो रहे थे। कभी राहुल द्रविड़ कोचिंग कर रहे थे तो कभी जो है वो लक्ष्मण कोचिंग कर रहे थे। बट फिर आई एक खबर एशिया कप के हवाले से कि पाक भारत जो ये टाकरा होने वाला है, ये दंगल होने वाला है, उससे पहले भारतीय टीम को लगा एक झटका। वो झटका ये है कि हेड कोच राहुल द्रविड़ कोविड पॉजिटिव आ गए हैं और भारतीय मीडिया के मुताबिक राहुल द्रविड़ की एशिया कप के लिए टीम में साथ जो शिरकत है उनकी वो मशकूक है। अभी कंफर्म नहीं है कि वेदर वो ही बी विद द टीम, ही वुड बी ट्रैवलिंग विद द टीम और नॉट। सो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल द्रविड़ की कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद टीम यूएई रवानगी से कबल ये पता चल गया था कि उनको कोविड पॉजिटिव हो गया है। तो उससे पहले ही, रवानगी से पहले ही इट वॉज वेल अवेयर कि राहुल द्रविड़ जो है वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। सो राहुल द्रविड़ के हमरा जिम्बाब्वे भी नहीं गए थे, यस, बिकॉज लक्ष्मण जो है वहाँ पे कोचिंग कर रहे थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज़ में वीवीएक्स लक्ष्मण ने हेड कोच के फ़राइज़ जो है वो अंजाम दिए थे। सो नाउ क्या होगा एशिया कप में, वेदर राहुल द्रविड़ वुड बी देयर इन एशिया कप और नॉट, बिकॉज जिस तरह आपको अभी बताया कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है वो लक्ष्मण जो है वो कोचिंग कर रहे थे। बट जब मैं बात करती हूँ भारत की, तो भारत ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट क्लीन स्वीप तो कर दिया, सीरीज़ भी अपनी जीत ली। बट कल जो मैच हुआ, सिकंदर रजा ब्रॉट इट रियली क्लोज और बहुत ही फाइन, मेरा ख्याल से 13 रन के कोई मार्जिन से जो है वो सिर्फ जिम्बाब्वे को शिकस्त हासिल हुई। विच मीन्स जिम्बाब्वे जिस तरह बांग्लादेश को हार्ड टाइम दिया था, जिम्बाब्वे इज बीइंग प्रिटी, दे वर्किंग प्रिटी स्ट्रॉन्ग टू कम फॉरवर्ड। और जिस तरह टफ टाइम दिया इंडिया को भी कल, इट वाज वेरी एविडेंट कि कहीं ना कहीं दे आर डूइंग समथिंग वेरी राइट एंड स्पॉट ऑन। फिर बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान वुमेन टीम की नाकिस परफॉर्मेंस के बाद बहुत सारी तब्दीलियों की बात हो रही है। वुमेन्स एशिया कप से पहले जो है वो बिस्मा मारूफ की कप्तानी, उनको कप्तानी से हटाने के इम्कानात सामने आ रहे हैं और कुछ इसी तरह की बातें हो रही हैं। अभी मशावरत हो रही है, मशावरत ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है कि बिस्मा मारूफ को एज कैप्टन जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा एंड दी एक्सपीरियंस्ड निदा डार वुड टेक हर प्लेस। और कुछ इसी तरह की बात आ रही है कि निदा डार जो है वो कैप्टनसी करेंगी। अब जब एशिया कप वुमेंस में बात करेंगे, वुमेंस टीम की क़यादत के लिए जिस तरह निदा डार का हमने बताया, हेड कोच डेविड हैम की बात करें तो हेड कोच डेविड हैम के बगैर एशिया कप के स्क्वाड के लिए ट्रायल्स मैचेस करवाए जाएंगे और एशिया कप 1 अक्टूबर से बांग्लादेश में स्केड्यूल्ड है। पाकिस्तानी टीम 28 सितंबर को रवाना होगी। इसमें बहुत सारी तब्दीलियां हो रही हैं। जवेरिया खान जो हैं वो भी शायद स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगी। बहुत सारी खबरें इस वक्त आ रही हैं मगर अभी तक फाइनल न्यूज़ नहीं है। बट
बहुत स्ट्रॉन्ग खबर है कि बिस्मा मारूफ वुड नॉट बी लीडिंग दिस साइड, वो सिर्फ टीम का हिस्सा होंगी बट शी वोंट बी द कैप्टन एनीमोर। और यूजुअली होता यही है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मर होता है टीम का उसको कप्तान बना दिया जाता है। सो येस, द एक्सपीरियंस निदा डार और जिस वक्त सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रही हैं उनको कैप्टनसी के लिए जो है वो ऑप्ट किया गया है। मूविंग ऑन फर्दर, फुटबॉल की बात करें तो रवा साल कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले कर दी गई है। पाकिस्तान कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए फौजी एहलकार भेजे जाएंगे। इस सिलसिले में दोहा और इस्लामाबाद के दरमियान तय मुआहदा की समरी जो है वो मंजूर कर ली गई है और फुटबॉल वर्ल्ड कप रवा साल नवंबर कतर में होगा। सो ये था आज का व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स और हम अपनी अब डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह मैंने कहा था फोकस हमारा जो है वो हॉकी पे होगा, बट बिफोर दैट मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड यस, मैं भी इस वक्त जो है ना सामीन की तरह खबरें सुन रहा था। आई वाज लिसनिंग अबाउट राहुल द्रविड़ एंड निदा डार, दैट्स वेरी नाइस। और कॉमनवेल्थ गेम्स वैसे वाकई वुमेन क्रिकेट में कुछ होना था, बहरहाल बहुत ज़रूरी है। एंड यस, अब सिर्फ पाकिस्तानी फुटबॉल नहीं बल्कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस आर आल्सो गोइंग टू बी देयर, सो दैट इज सो कूल। और जैसे कि सफीरा ने कहा कि आज हमारा डिस्कशन जो है वो हॉकी के हवाले से होने वाला है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, आई थिंक वी हैव बीन बिल्डिंग द केस फॉर दिस डिस्कशन। और मुझे याद है कि हम जिन मेहमान को भी इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जब यहाँ से जा रहे थे आखिरी बार, तो हमने उस वक्त उनको ये कहा था कि जी अब अगले प्रोग्राम में हम आपसे इंशाल्लाह बहैसियत सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बात कर रहे होंगे। सो अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हम न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम हैदर, और बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल, और हम ये क्रेडिट भी लेना चाहते हैं हैदर के सबसे पहला इंटरव्यू आफ्टर हैदर हुसैन हैज बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। पहला इंटरव्यू आप यहाँ देखें समा गेम सेट मैच पे। सो खुशामदीद गेम सेट मैच जी बिल्कुल, जब एक्टिंग सेक्रेटरी बना था जब भी पहला था, अब कंफर्म हुआ तो जब भी पहला है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। हैदर वैसे एक और चीज़ आती है, अभी हम आते हैं सारी डिटेल्स में, लेकिन अगर आपको याद हो तो आप जब हमारे स्टूडियो आए थे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, थोड़ी इमोशनल नौयत का सवाल, कि वो जो कुर्सी आपने देखी होगी, वो ऑफिस आपने देखा होगा, आप खुद हॉकी के इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, आपके वो एहसास ज़ाहिर है उस वक्त थोड़े से उसमें एक तशनगी तो होगी कि जी मैं अभी एक्टिंग सेक्रेटरी हूँ, अब आप परमानेंट इस कुर्सी में ग्लू लगा के बैठ गए हैं, तो अब एहसासात क्या हैं? कुछ ज़रा वो इमोशनल साइड ऑफ थिंग्स बताइए हमको। बिल्कुल, जब एक्टिंग चार्ज था तो आंखें नम हो गई थी, यकीन नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा परवरदिगार ने टारगेट दे दिया मुझे। और मैंने कहा कि मन थी सही, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं कराची का सेक्रेटरी बना था तो 1 वीक के लिए मुझे चार्ज मिला था। जब पाकिस्तान का एक्टिंग चार्ज मिला था तो 1 मंथ के लिए मिला था। तो मैंने जब भी यही सोचा था और अब भी यही सोचा था कि जो मंथ है, एक एक दिन कीमती है, एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह ताला को जवाब देना है। ये मनसब ऐसे नहीं मिलता, जब परवरदिगार कुछ करवाना चाहता है तो इसीलिए मनसब मिलता है, वरना मनसब नहीं मिलता। तो अब ये परमानेंटली 4 ईयर के लिए मुझे इलेक्ट किया गया है, तो इंशाअल्लाह एक एक दिन जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा अब जो है ना एक एक दिन मैं काउंट कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह कोशिश मैं कर रहा हूँ कि ग्रास रूट से स्टार्ट करूँ। बिल्कुल, और मतलब आप जिस तरह ये कह रहे हैं बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ कि ठीक है, ऊपर वाले का बहुत हाथ होता है कि जिस तरह आपका पाथवे चल रहा होता है, मगर साथ ही साथ हैदर मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वरना अगर आप क्रेडिबल ना हो या आप मेहनत ना कर रहे हो, क्योंकि जिस शख्स से हम बात करते हैं आपके लिए, तो हर बंदा कहता है नहीं जी कराची हॉकी में तो बहुत काम किया है हैदर हुसैन ने। सो नाउ आई होप कि कुछ अरसे बाद हर बंदा ये कहेगा नहीं जी पाकिस्तान हॉकी के लिए हैदर हुसैन ने बहुत काम किया है। सो वी वुड इंशाल्लाह एक्सपेक्ट दिस। बट अब जब मैं बात करती हूँ, अभी तो मुझे पता है कि आपने अभी यू हैव जस्ट ओन्ड योर थ्रोन, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा विद सेटलिंग इन थिंग्स। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से एक अदद जो थोड़ी सी तिश्नगी चल रही थी, उस तिश्नगी को क्या ख़त्म कर, अभी तो टाइम लगेगा। अभी ये मेरा ख्याल से इट्स टू अर्ली टू आस्क, या अभी शुरू हो गए हैं सिलसिले? नहीं सवेरा, पहले तो देखें, जब आप आए थे कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड, तो आप लोग भी सरप्राइज़ विज़िट था आपका, और आप भी सरप्राइज हो गए थे दोनों कि यार यहाँ पर इतना लोग खेलते हैं हॉकी। इसी तरह जिस तरह हमने कराची को लेके गए हैं, इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट को लेके जाएंगे, और पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि एक मॉप लेके आना है। यहाँ पर हमारे पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने हैं, क्वान्टिटी हमने बढ़ानी है, फिर उसमें से क्वालिटी निकालनी है। तो हमारे पास अभी क्वांटिटी नहीं है प्लेयर्स की,
और हमें आप भी अगर बोलेंगे कि एक प्लेयर आपको नज़र आया तो वहाँ पर भी हमारी सिलेक्शन कमेटी जाएगी। और यहाँ पर किसी भी अहदेदार की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर एसोसिएशन के सेक्रेटरी होंगे तो वो बताएंगे। हमें कोई आम शख्स भी बताएगा कि यहाँ पर कोई टैलेंटेड प्लेयर है तो वहाँ पर जाएंगे और उसको पिक करेंगे। बिल्कुल। तो हैदर, ये बड़ा अच्छा हुआ कि आप मामलात को इसी तरफ ले आए, बिकॉज देखिए 1 महीने से ज़ायद अब आप इस पोजीशन पे गुजार चुके हैं। येस, आपका मेन मैंडेट इलेक्शन करवाना था, लेकिन अंदाज़ा तो आपको बहैसियत KHA में भी आपको बेसिक सेक्रेटरी यहाँ पर भी हो गया होगा कि चैलेंजेस क्या हैं। तो अगर मैं हैदर हुसैन से ये पूछूं, न्यूली इलेक्टेड सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से, कि पहले 2 या 3 काम आपको इमीडिएटली कौन से करने हैं पाकिस्तान हॉकी को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए? ज़ाहिर है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 2-3 चीज़ें अगर आप बताएं। शॉर्ट टर्म में सबसे पहला जो प्लान है कि हम टैलेंट हंट करें। अभी जैसे आज मेरा वेरी फर्स्ट डे है यहाँ पर लाहौर में, और कल मेरी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स से मुलाकात हुई थी और वहाँ पर हमारी एक टीम बन गई है। तो सिंध में भी टैलेंट हंट शुरू कर दिया है। अभी मैं DG पंजाब स्पोर्ट बोर्ड से मिला हूँ तो वो भी टैलेंट हंट शुरू कर रहे हैं। और बल्कि इसी तरह मैं सारे सूबों में जाऊँगा और सारे सूबों में DG स्पोर्ट बोर्ड से मिलूँगा, इसलिए कि उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। उनके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होंगे और सूबाई एसोसिएशन इन्वॉल्व नहीं होगी तो हम टैलेंट हंट का मामला हम कर नहीं सकते। और सिलेक्शन कमेटी हमारे साथ जाएगी और सबसे पहला हमारा ये है कि फ़ंड्स लाना है। और फंड्स कौन देगा? फंड स्पोर्ट बोर्ड देगा, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर देगा। तो हम हर जगह जहाँ पर भी होगा हम फंड्स के लिए जाएंगे। और पाकिस्तान प्लेयर्स को जो आपने सुना होगा कि उनकी डेलियाँ नहीं मिली हैं, हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी ये होगा कि उनकी जो डेली अलाउंस है वो उनको दिया जाए। सो आप ये जो टैलेंट हंट की बात कर रहे हैं हैदर, ये मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए होगा या अभी एक जेंडर पे फोकस करके आगे बढ़ेंगे एंड ग्रेजुअली दूसरी जेंडर की तरफ मूव ऑन करेंगे? अभी मेंस का होगा। वुमेन्स का हमारा एक वुमेन विंग है जिसमें सैयदा शैला रज़ा और चेयरपर्सन है और सेक्रेटरी तंजीला चीमा है। ये अपनी टीम बना रही हैं और हर सूबे में टीम होगी तो वहाँ पर भी यही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अभी जो हम पहले जा रहे हैं वो बॉयज़ की तरफ जा रहे हैं। ऑलराइट, तो हैदर, आपका जो एक और बात मुझे समझ में आ रही है कि प्रोविंशियल फोकस इसलिए ज़्यादा है बिकॉज अब प्रोविंसेस के पास काफ़ी फंड्स होते हैं अवेलेबल 18th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के, बिकॉज स्पोर्ट्स एक मेजरली एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सो अब तक आप ये कह रहे हैं कि देखिए सिंध का तो आपके साथ, और हमें नज़र भी आ रहा था कि आपकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है विद सिंध गवर्नमेंट और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, बट पंजाब, KP, बलोचिस्तान, अब आप इनको 1 by 1 टच करेंगे उनसे बजट एलोकेट करवाने के लिए फॉर दिस टैलेंट हंट प्रोग्राम? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली मैं यही करूँगा। इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट तो हमेशा हमें सपोर्ट करती थी और करती है और करती रहेगी। इसी तरह पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं ही चाहूँगा कि मुझे इतना इल्म नहीं है KP के और बलोचिस्तान का, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोविंशियल एसोसिएशंस को वो फंड दें और उनकी हेल्प करें, इसलिए कि उनकी टीम्स भी हैं। इन्होंने भी अपनी टीम्स बनाई हुई हैं, पंजाब स्पोर्ट बोर्ड ने और सिंध स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने, जो सिंध स्पोर्ट डिपार्टमेंट है। तो इसी तरह सारे ओलंपियंस, इंटरनेशनल और लोकल प्लेयर्स की टीम्स हैं जो जगह जगह टैलेंट हंट करेगी। और फोकस हमारा इंटर स्कूल होगा, हमारा अंडर 13, अंडर 10, अंडर 8, 16, ये जो हमारा बिगनर्स हैं इधर से हमने स्टार्ट करना है। और मैं कोशिश करूँगा कि अंडर 14 की नेशनल टीम भी हो ताकि उसको हम फोकस करें। बिल्कुल बेहतरीन, मतलब ग्रास रूट लेवल पे काम, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे जो है आप काम कर रहे हैं। मगर इन सारी चीज़ों में हैदर, हम बहुत अरसे से एक बिल्टअप कर रहे थे द लीग, हॉकी की लीग, पाकिस्तान में हॉकी की लीग द मैक्स बहुत ज़रूरी है। हायरिंग्स भी हो चुकी हैं, लीग के ऊपर काम भी हो रहा है, सलमान सर बट भी एसोसिएटेड थे, वो कहाँ है अभी इस सारे सब कुछ? मैंने अभी तक उसका एग्रीमेंट नहीं रीड किया है। मैं अभी आपके इस चैनल के बाद, इंटरव्यू के बाद मैंने रखा हुआ है कि मैं इसको देखूं। और लीग सबसे प्रायोरिटी है और इंशाल्लाह ताला लीग जो है जिस टाइम ऑफ फ्रेम दिया हुआ है उसी टाइम ऑफ फ्रेम में हम कोशिश करेंगे कि हो। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम यह है कि जनवरी में वर्ल्ड कप है और इन्होंने दिसंबर में लीग रखी हुई थी। तो मैं चाहूँगा कि वर्ल्ड कप के बाद होगी तो इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल होंगे।
राइट, एब्सोल्युटली। और बल्कि हैदर, अभी वैसे हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, लेकिन बताया चलें कि हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम गेम सेट मैच में भी द मैक्स के हवाले से किया था, जिसमें सलमान सरवर भट्ट साहब, जो कि इस पूरी लीग को मैनेज कर रहे हैं और पाकिस्तान सुपर लीग स्टार्ट करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उनका हमने एक तफसीली इंटरव्यू लिया था। तो हम आपको वो लिंक भी भेज देंगे ताकि आपका भी ज़रा थोड़ा सा, आप जब देखने बैठे हैं डॉक्यूमेंट्स को तो आपका होमवर्क हुआ और लोग कहें वाह, इसको तो पहले से सब पता है। सो चलें जी, इसी बात पे हम इस वक्त जो है वो बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है और आगे भी आप लोग की सपोर्ट हमें चाहिए होगी। Absolutely, hockey is very close to our बिल्कुल, we'll definitely support you because पाकिस्तान हॉकी जब बात आती है ना, बार बार कहीं ना कहीं मुझे लगता है पाकिस्तानी के दिल में कहीं ना कहीं हॉकी का वो टिल्ट और वो बायस कहीं ना कहीं ज़रूर है। मगर हैदर, हम आपसे डिस्कशन अभी कंटिन्यू करेंगे, एक क्विक ब्रेक पे जाएंगे हम और ब्रेक से जब आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ हैं और हमारे साथ इस वक्त लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हाल ही में इलेक्ट होने वाले सेक्रेटरी हैदर हुसैन। और हैदर से जाने से पहले हम बात कर रहे थे उनके प्लान्स के हवाले से कि फ़ौरन क्या करना है उनको। ज़ाहिर एक चैलेंज बहुत बड़ा है। हैदर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी आपने अभी देखी हाल में। आई मीन एट द एंड ऑफ द डे जो भी करें, इट ऑल बॉइल्स डाउन कि लड़के मैदान में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मेंस हमने अभी चैंपियंस ट्रॉफी में देखी और हमें इस बात का अंदाज़ा है कि अभी पाकिस्तान को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ऑन द फील्ड चीज़ों के हवाले से इस वक्त आपके क्या प्लान्स हैं? ज़ाहिर है कोचिंग के हवाले से भी कुछ सवालात हैं, लोगों के जहन में आ रहे हैं कि क्या मुस्तकबिल है, क्या सिलसिला है। क्योंकि हमारे यहाँ एक जनरल जो तरीका होता है वो ये होता है कि हर मुश्किल को जो है ना वो हम कहते हैं जी हमें विरसे में मिली है। सो हम उम्मीद ये करते हैं आपसे तो हम ये ज़्यादा नहीं सुनेंगे, लेकिन ऑन द फील्ड जो खिलाड़ी हैं, देखिए टैलेंट हंट करके खिलाड़ी पाकिस्तान की ग्रीन पहन के मैदान पे उतरने में एक टाइम लगता है, बट वो जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके हवाले से आपके क्या एक्शन है और मैनेजमेंट और कोचिंग के हवाले से? देखें, टाइम तो लगेगा। मतलब अगर आप लोग चाहोगे कि हम 6 मंथ में कोई जादू की छड़ी लाएं और उसको पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड चैंपियन बना दें या टॉप 10 में लेके आ जाएं, लेकिन थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 2 साल में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। अभी जो मैंने इनकी परफॉर्मेंस दी कॉमनवेल्थ गेम में, मैं कदरे बेहतर था जो लास्ट परफॉर्मेंस थी, तो मुझे तो बेहतर लगा। अभी हम सिर्फ रिपोर्ट का वेट करें, मैनेजर की रिपोर्ट आ जाए और कोच की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद फिर सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। ठीक। अच्छा हैदर, एक चीज़ जो है, जब जैसी ये इलेक्शंस की खबर आई, जैसी आपके जो है जीतने की खबर आई, एक साथ साथ और मैंने इन सारी सिलसिलों में एक और स्टेटमेंट देखी कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स दे आर नॉट हैप्पी विद दीज इलेक्शंस। ये क्या सिलसिला है, ये क्या माजरा है? क्या हम फिर से उस वो जो कहते हैं वो हैमस्टर रिंग में फिर से गोल गोल घूमने लगेंगे? व्हाट्स हैपनिंग? पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड हमारा पार्ट है और हम उसे ओन करते हैं, लेकिन उनको जो है मिसगाइड किया जा रहा है। लेकिन देखें, मैं आपको बताऊं कि मुझे कहा गया कि यार आपके ख़िलाफ़ जो है बड़े लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं। मैंने कहा पहले ये बताओ कि ख़ुद उनका क्या माजी रहा है। अगर उनका माजी बहुत अच्छा रहा है तो सही है, अगर थोड़ा बुरा रहा है तो फिर मुझे फ़िक्र नहीं है। मुझे उस दिन फ़िक्र होगी जब बहुत डेड ऑनेस्ट बंदा मेरे लिए कोई सवालिया निशान छोड़ के जाएगा। उस दिन मैं ग्राउंड पे नज़र नहीं आऊँगा। लेकिन हाँ, किसी ने कोई हैंगी बैंगी किया और वो मेरे बारे में बोले तो मुझे फ़िक्र नहीं है। और मेरे ख़्याल से स्पोर्ट बोर्ड को मिसगाइड किया जा रहा है। और सिर्फ मैं एक बात बोलूँगा कि डी नोटिफाई वही कर सकता है जो नोटिफाई करता है। हम लोग आते हैं पाकिस्तान ओलंपिक के अंडर में, IOC के चार्टर के नीचे, लेकिन जो है डी नोटिफाई जो करवाया गया है वो गलत है। मेरे ख्याल से स्पोर्ट बोर्ड को भी बाद में एहसास होगा कि ये गलत किया। हमारा जो भी फैसला होगा वो कांग्रेस करेगी और कांग्रेस जो है हमारी जो है हो गई है, हमारे इलेक्शन हो गए हैं। अब जो भी चीज़ें होंगी वो कांग्रेस डिसाइड करेगा।
सिचुएशन ये काफ़ी अभी लग रही है कि गंभीर, इतना आसान मामलात है नहीं, लेकिन अल्लाह करे मामलात सुलझें, हॉकी आगे बढ़े। बिकॉज जब तक लेकिन जी नहीं, बहुत आसान मामलात हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। लेकिन अगर देखें आप समा पे हैं और आपका नोटिफाई कोई और चैनल निकाले तो आप उसको मानेंगे कि कल से आप ना आए? जी बिल्कुल नहीं। आपको समा नोटिफाई किया ना, समा ने, तो समा ही आपको करेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की जीनत बने में है और डेलिबरेटली एक माफिया है जो इस चीज़ को वायरल करता है। और हमारे माशाल्लाह से बहुत ही मासूम लोग हैं जो उसको बिल्कुल आगे वायरल कर देते हैं। और उसके बाद ये जो चीज़ें, जिस दिन से मैं आया हूँ ना, उस दिन से सुन रहा हूँ, और 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कि 1 महीना रह गया, 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, अब 4 दिन बाद नोटिस है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ आएगा उसको फेस करेंगे और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए, जो भी इदारे होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलते हैं ना। हमारा जो आइन है वो हर जगह से रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, तो उसी के तहत हम चलेंगे। उसके अलावा कोई चीज होगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली उसी तरह फॉलो होंगी, उसी तरह प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे। बट हैदर, गुड लक टू यू। आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ये जो ना वायरल किया जा रहा है, जी 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 जी, इसको सिर्फ माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि उधर जाएं। और मैंने कराची में भी यही रखा था कि माइंड जो है डाइवर्ट किया जाता है, तो हम फोकस सिर्फ पॉजिटिव चीजों में रखेंगे। अगर कोई चीज नेगेटिव चीज कोई कर रहा है तो हमारा बिल्कुल जी पॉजिटिवली फोकस करें हैदर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। पॉजिटिवली फोकस करें। वी आर लुकिंग फॉर बेटरमेंट इन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। बिकॉज जब ऊपर किसी ओहदे पे आ जाते हैं तो दुश्मन और बढ़ जाते हैं। बट ऑल द बेस्ट विशेस। एंड यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। ऑलराइट, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। हॉकी आज हमारा टॉपिक है। अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन। हॉकी के डिस्कशन को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। हमने ऑफ द फील्ड बातें तो की, अब जरा लेट्स टॉक ऑन द फील्ड अबाउट हॉकी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज इन पाकिस्तान हॉकी राइट नाउ is the Pakistan hockey coach, the Dutchman from Netherlands, who is in Netherlands right now. Siegfried Aikman joins us from his home country. So we welcome you to game set match, Siegfried. I hope you are doing fine. Yes, I'm fine. Thank you. And I hope you are enjoying your bicycle rides there in Netherlands. I saw you sharing a lot of pictures about that, and I was quite astonished. How do people recognize these bikes? Because there are thousands of bikes there. Well, the same like people in Pakistan recognize their motorbikes in the city. If you go in the city, you see thousands of bikes, and I always ask myself, how can they find their bikes? Right. Well, same in Holland, you know your own bike. Okay. So you've got it spot on, definitely. Like, how would they recognize their bikes? And definitely. But Aikman, now talking about the performance that Pakistan hockey team did during Commonwealth Games. Like, if I ask you, obviously, it wasn't convincing, it wasn't that impressive, but you have been working with Team Pakistan lately, and you know that the transition would take time. Where do you rate Team Pakistan? How fast are they learning, and how much more improvement do they need? Okay. Firstly, I think that the performance in Birmingham was not terrible. It was a good performance, and in the build-up, what we do is we started 8 months ago, and we started from scratch. Right. Before that, the team didn't play long-time hockey. They were not really in camps. We started camping. We changed many things in hockey, in the tactically, physically, mentally, the way we want to play, what we expect from players. And players had to change because they were not used to that game. And if you see how we progressed in those months, it's quite good actually. So I'm happy with that, and I think that we will grow further. But we need competition, we need experience because we have a young team. We play with a team who play mainly at the Junior World Cup in December.
Right. Many of these players are now in this team, so they are unexperienced. They are learning, but they have talent, and talent is something which is very important. But they got that, they got the talent, but they are educated on grass hockey and with traditional old-fashioned ways of hockey. So to change that, takes time, and unfortunately, it takes more time than people in Pakistan would like to have because they want to close the gap in very short time. Yes, But absolutely. it takes time. But looking at what we do, I'm satisfied. That's absolute. That's pretty nice and very comforting words, Coach. I think the good thing which has happened in 2022 is that Pakistan hockey team has got the opportunity to play against few of the best teams in the world. I mean, that was something which was missing in the past few years. The next tournament that is coming is Sultan Azlan Shah Cup, and if I'm not mistaken, Pakistan will be taking part and will be taking on some big teams from Asia in this tournament. So you are in Netherlands right now. So when do you plan to return to Pakistan, A? And my second question would be, let me be pretty blunt about that. Do you see with the change in management at the Pakistan Hockey Federation and all, do you see even a medium-term future for yourself in Pakistan hockey? Firstly, I would like to be in, I will answer the first questions first. Yeah. When will I return to Pakistan? Well, I would like to return as soon as possible, but at latest at 14th of September, because at the end of this month, a big domestic tournament will start where all my players will be part of that tournament. And that means that they will be with their clubs, their departments at this moment, and they will prepare for that tournament, so they are not available for the national team. Then they will play that tournament, and shortly after that, I think 16th of September, they will start the second tournament. That tournament I want to see because I want to see in which shape they are. I would like to look for eventual new players, because when I'm in Pakistan, many people tell me that I have the wrong players. But these are the players I know, and these are the players I work with. So that tournament can give me the opportunity to see more other players. And maybe there are better players, I don't know. But, you know, when you coach a country as Pakistan, then you have 220 million assistant coaches. And those assistant coaches know a lot about hockey, and they assess many talents, and they know many talents, but I don't know them. So I need to see, and I need to see players who play on the domestic highest level. Yeah. And there I can make an assessment, and if players are good, why shouldn't I select them? Because I want the best for Pakistan, and I want to win all matches. So And the best players will play. Yes, and definitely to make a good team, you need to be like associated with the domestic setup as well, so that you can see what are the available talents that we have. But if I ask you, Coach, what are the major challenges that you face while coaching Team Pakistan? Like the most important and major challenge that you have faced over the period of time? The most challenge, the biggest challenge I have is to get the guys in a tactical structure, in understanding what tactical hockey is, in trying to play the modern hockey in which, if you look at Australia, all attackers can defend. They are very good defenders. They are physically fit. They are very fast. They do many one-touch passes. If you look at the top teams in the Olympic final, for instance, Australia against Belgium, they played 24 passes without losing the ball. Pakistani players cannot do that. The first touch is most of the time not so good. They play the ball inside the body. They receive the ball right up in a right up position, so makes it more difficult. They play actually a kind of grass hockey on turf. And that's not strange, because where did they learn to play hockey? On grass. Yeah. Yes, What are the principles they got? It's the old-fashioned principles, like how they played 30 years ago. But hockey changed a lot, and hockey is continuously changing. And if it changes, you need to adapt to the new styles, the new ways. And
sorry to say that, but you can see that the Western countries are better in that. But that's not for nothing, because from the age of 6, they already start teaching them. They teach them to coach. They teach them to understand tactical principles, play according to those principles. In Pakistan, players have no opinion about the game. They follow orders. So what we want is that the decision-making gets faster. To do that, the players need to be aware and they need to be competent to make those decisions. That takes time. And you can see in our matches that we play very well, but at the end we make stupid decisions because we still want to play the old-fashioned way. We want to score ourselves. Everybody runs to the ball, close space. They all are focused on scoring themselves. Yeah. If you look at the top teams, they pass to the free player. Look at Australia. Teamwork. They have two players at the second post, down, aggressive, and desperate to score the goal. Our players are right up. Before they are down, ball is gone. And those things, we need to change the habit. And if players have the habit long time, it takes long time to change the habit. I'm not a magician that I can do it. I can create awareness. I can get them into structure, and I think we play good structure games. We get many chances, get opportunities. We play attacking hockey. Right. But on the details, the deep details, we lack. And those deep details, we need to practice a lot. We need to challenge, and hockey you learn in matches. So the most matches we can play against very good opposition will help us to grow. And that's what I'm looking for, as much as possible. And that's why I was so very happy with the Commonwealth Games, because that was the first time that we play competition against Western teams. When you play friendly, they are a bit more relaxed and they don't fight so hard. But when it's a real competition, like in a Commonwealth Games, which is a highly qualified tournament, then you see that they fight with all they have. Right. And that competition is what we need, because that's where we learn. And we learn quickly. My players were surprised. Although I showed them videos, we talked about, but when they experienced it, they were impressed. But they also knew that if you look at our Australian match, for instance, if I look at the data, Australia had 10 goal-scoring opportunities. We had also 10. They had 6 penalty corners, we had 4. But they scored 3 penalty corners. They scored their goal-scoring opportunities. We didn't. So we lost 7-0. Everybody said it was a terrible game. But I saw a team who was competing and creating. The first 3 chances were for us. Yeah. But only we could not convert it into goals. And that part, yes, that has to grow. So I was very disappointed with the result, because I hate losing, and when it's with big numbers, it's even hurts more. But I also see the positive things in which our players are growing. Absolutely. And if I look at the final, then in the final, they won 7-0. Oh, absolutely. And their opponent didn't create any penalty corner, didn't create goal-scoring opportunities. But the opponent was number 5 in the world. Yes. And we are number 18. True. And that's a huge difference. It shows the talent and the capacity we have. So I'm positive about what we can do in the future, but I know that we need to work very, very hard to get there. Right, Coach. The important thing, in fact, the comforting factor that I can get from this very interesting talk that you gave in the last 5 minutes is that there is the hunger in our players. The youth is there. They want to learn, and they want to learn the modern form of hockey. And correct me if I'm wrong, that the more we keep playing with these teams, I'm pretty sure the reason why we are at number 18 is that for a very long time, Pakistan did not even play competitive hockey. And now at least we are in the international circuit. So we do expect, I think the rankings will improve as the skill level will improve. So do you see the hunger, the real hunger? These boys, they do want to learn from you and the level of international hockey that you are bringing to Pakistan. Yes, but I want to correct you first, because we are at level 18 at the moment. But when we started 8 months ago, the gap between number 17 was almost 200 points. Right. At this moment, the gap is only 20 points. Right. Wow. And number 17 is on 50 points. So we are already closing the gap.
You don't see it in the progress in the ranking, but in points we are closing in. I hope that after Sultan Aslan Shah, we will go up in ranking because we are now very near to the other teams. So that's the first one. The second one, if it's about the hunger, our players, they have a strong desire to perform, because what do they hear in Pakistan? Only that they are not good enough. They are not Olympians. They don't win gold medals. They don't win World Cups. And Pakistan is living in the past. They are celebrating the gold medals from 30 years ago or 34 years ago. Yes. Come on, guys. The world changed in 34 years. Who knows our current national team players? Nobody. Yes. Who is celebrated? Right. The old players who are now very old. So they are not the role models anymore for our juniors. The players we need young players. They need young people where they look up, who they know. Yes, there's nobody a knows very, our players. yeah, there's a very big gap. Just one last question, a quick question and a quick reply that I expect. Is it really hard to motivate these youngsters, these boys, when there's no monetary push coming in? Because this is one issue, this is one harsh reality that's attached with Pakistan hockey right now. Well, their hunger to perform is bigger. The passion for hockey is huge. These guys really want to perform. They went without having salary for 6 months or something. So it's quite a long time, but still they fought till the last minute in our matches. We scored goals in the last dying minutes because the players want to perform. So the passion, the commitment, their eagerness to perform is there. And it's not about money. Money is, of course, they have a lot of social problems at the moment because they cannot pay their bills. True. But that's another thing. But on the pitch, they are sports people. And they want to perform. And they really want to earn their spot in the international hockey. And they want to earn the respect of Pakistani people. Because these players play for their country. They are proud of their country. Believe me, they really want to give everything for their country. Great, Coach. Thank you so much. And we are counting on you, inshallah. You must have heard this word, right? Inshallah. Counting on you. And the best thing about Aikman is that बहुत सीधी बात करते हैं और कोई लगी लिपटी बात नहीं करते. किसी को बुरा लगता है तो बुरा लगे. अभी आपने उनकी ये बात सुनी. We'll inshallah be, hopefully he'll be back in Pakistan. इनसे दोबारा आपकी हम बात कराएंगे. And hopefully he would stay. Yes. ये बहुत बड़ा एक जरूरी है. कंसिस्टेंसी इस सवाल का जवाब उन्होंने मुझे दिया नहीं वैसे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. लेकिन बहरहाल आई होप यू गाइस एंजॉयड द प्रोग्राम. आज जो हमने हॉकी पे फोकस रखा और इसी तरह से जारी रहेगा. लेकिन अब we are going big time into cricket now because the Asia Cup is approaching, so there'll be a lot of cricket and there are some amazing programs coming up. Asia Cup से पहले ज़बरदस्त प्रोग्राम आने वाले हैं जो आप बहुत एंजॉय करेंगे. अदील और सवेरा को इजाज़त दीजिए. इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless. अल्लाह हाफ़िज़.